और अब बात करते हैं मोरक्को की, जहां रेस्क्यूअर्स तेज़ी से काम कर रहे हैं रेस्क्यू का रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक, जब मुसलसल कोशिश की जा रही है ढूंढने के लिए सर्वाइवर्स को। जब मोरक्को में आने वाले इस पावरफुल अर्थक्वेक ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है पूरे रीजन में, जबकि इस समय है डेथ टोल 2500 तक, जो कि मुसलसल कंटिन्यू कर रहा है बढ़ना। अभी तक 2500 लोग कंफर्म डेड हैं और इतने ही जख्मी हुए हैं देश में, जिनको हिट किया है 6.8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है उनके देश की मोर देन 120 ईयर्स की हिस्ट्री में। जी हाँ, ड्रोन फुटेज में देखा जा सकता है डेविस्टेशन, जहां नजर आ रहे हैं डिस्ट्रॉयड होम्स और लोग कोशिश कर रहे हैं क्लियर आउट करना रबल को, जबकि लोग रह रहे हैं मेकशिफ्ट टेंट्स में भी खौफ के मारे, क्योंकि वो घरों के अंदर नहीं रहना चाहते, क्योंकि हालात काफ़ी मखदूश हैं बिल्डिंग्स के। जबकि सबसे बड़ा चैलेंज है कंटिन्यू करना रेस्क्यू एफर्ट्स को, जब रोड्स बिल्कुल तबाह हो गए हैं और एड इफेक्ट हो रही है जाने के लिए रिमोट विलेजेस की तरफ, जो कि हार्डेस्ट हिट हैं इस पूरे रीजन के अंदर। जबकि अथॉरिटीज़ यूज़ कर रही हैं हेलीकॉप्टर्स को भी रीच करने के लिए वर्स्ट हिट एरियाज़ को, और मशीनरी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके ज़रिए रिमूव किया जा रहा है रबल इम्पॉसिबल रोड्स पर से। एफर्ट्स प्राइमरीली फोकस्ड हैं रेस्क्यू करने के लिए जख्मी विक्टिम्स को वर्स्ट हिट माउंटेनियस रीजन में। ये आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर विजुअल्स देख सकते हैं एक घर के अंदर के हालात कितने ख़राब हैं। पूरी दीवारें क्रैक कर गई हैं और लोग परेशान हैं। उनका सारा ज़िंदगी की जमा पूंजी जो कि उनके घर में सामान था तबाह हो गया है, और लोग अब इस तरह की बिल्डिंग्स के अंदर भी नहीं रह सकते, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर टेंट्स के अंदर, मेकशिफ्ट टेंट्स के अंदर रहें। बहुत डेंजरस सिचुएशन है। माउंटेनियस रीजन मोरक्को का ज़बरदस्त तरीके से हिट हुआ है। टेलीविज़न स्क्रीन्स पर इस वक्त आप देख सकते हैं मोरक्को के हालात। आप एक घर के अंदर गए हैं, आप देख सकते हैं कि किस कदर तबाही फैली है। पूरी दीवारों के अंदर क्रैक्स मौजूद हैं, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बहुत ज़्यादा डेंजरस है लोगों के लिए कि वो उसके अंदर रहें, लेकिन फिर भी लोग अंदर जाकर अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। डेविस्टेटिंग सिचुएशन है इस वक्त मोरक्को के अंदर। सिटी ऑफ ह्यूस्टन भी इस वक्त जमा कर रहे हैं एड की चीज़ें ताकि पहुँचाई जाए मोरक्को। पूरी दुनिया से एड उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हार्डेस्ट हिट रीजन मोरक्को में इस वक्त उनका माउंटेनियस रिमोट विलेजेस हैं। जबकि रेस्क्यूअर्स मोरक्को में मुसलसल काम कर रहे हैं रेस्क्यू का। आपने विजुअल्स देखे डेविस्टेटिंग मोरक्को के अर्थक्वेक के, जबकि दूसरी तरफ रेस्क्यूअर्स मोरक्को में तेज़ी से काम कर रहे हैं रेस्क्यू का रेस करते हुए अगेंस्ट टाइम, जब मुसलसल कोशिश की जा रही है ढूंढने के लिए सर्वाइवर्स को, जब मोरक्को में आने वाले इस पावरफुल अर्थक्वेक ने मचाई है ज़बरदस्त तबाही पूरे रीजन में। जबकि इस समय है डेथ टोल 2500 का, और ज़ख्मी भी इतने ही लोग हुए हैं, लेकिन ये डेथ टोल मुसलसल कंटिन्यू कर रहा है बढ़ना। अभी तक 2500 लोग कन्फर्म्ड हुए हैं डेड देश में, जिनको हिट किया है 6.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ने, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है उनके देश की मोर देन 120 ईयर्स की हिस्ट्री में। सैम खीली हैं इस समय मूले इब्राहिम में और करेंगे रिपोर्ट वहाँ से। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। Another victim buried, returned to the earth that killed when it shook. More than 2,000 people have perished in the worst Moroccan earthquake in over 100 years. Most of the deaths were in villages in the Atlas Mountains, where homes cracked and crumbled late on Friday night. The pancaking of these buildings down a side street here in Mulai Ibrahim
killed 25 people. 3 or 4 are still missing, believed buried in the rubble. And this is a pattern that has been repeated throughout this province. And it looks very often like there's been some kind of airstrike. The collapsing buildings here are actually leaving holes as if they've been hit by Russian bombs in Ukraine. But this has been an all too natural disaster. At least 3 elderly people have been entombed here in the remains of their hotel, and a 4th guest is missing. After the quake, Sammy called his parents for a day and a half. It rang out until the battery died too. I'm here just because I have lost 2 of my best things that I have in this life. My parents, my father and my mother, I have lost them here. His grief turns to anger at the government, as it does for so many here. They have no planification, only they have words. It's a balloon of words, only that they have words. That's all. Aid is arriving, but slowly. In Azni nearby, authorities tell me that 27 people were killed in the quake and 1,200 lost their homes. So Fatima and her husband have said that when they were in the house, she was in the bath when this series of explosions broke out. They said there was no shaking of the ground. She's saying that it felt like the blast from a Kalashnikov automatic rifle, that this was like a sense that the place had been hit by a war. They had no idea that they were suffering from an earthquake. Luckily for them, they evacuated their family very rapidly. Nobody in their family was killed, but in the village there was 27 people were killed. The house is now abandoned. But Fatima led a team of local women to find food and shelter for the homeless before any aid arrived. All the food here, the result of private donations. Many villages here remain isolated, roads cut by landslides. Relief operations will focus on getting to them. Firefighters consider searching for bodies beneath the hotel. Their conclusion is disappointing. Amidst shocks and shattered masonry, it's just too dangerous to rescue the dead. So for now, Sammy's parents will stay buried where they are. आपने देखी रिपोर्ट सैम खायली की जब बताते चलें कि रेस्क्यूअर्स मोरक्को में तेज़ी से काम कर रहे हैं रेस्क्यू का जो कि रेस कर रहे हैं अगेंस्ट क्लॉक मुसलसल कोशिश की जा रही है ढूंढने के लिए सर्वाइवर्स को जब मोरक्को में आया है ये पावरफुल अर्थक्वेक जिसने मचाई है तबाही पूरे रीजन में जबकि डेड टोल उनका 2500 के करीब और इतने ही ज़ख्मी हुए हैं जो कि मुसलसल बढ़ता जा रहा है जब 6.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ने हिट किया है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है उनके देश की 120 ईयर्स की हिस्ट्री में ह्यूस्टन सिटी हॉल को भी लिट अप किया गया कल रात सॉलिडारिटी में जबकि रिलीफ फंड्स भी जमा किए जा रहे हैं मोरक्को भेजने के लिए